last Mm. classes. So on first day we have studied the all those basic things. On next day I have discussed what is a balanced diet. And Mm. yesterday class we discussed related to all lecture was related to free radical and antioxidant and what is the importance of all of these things and day to day life, because nowadays you're saying ki antioxidant is very important. So why it is so important? What is the role? How it enhances your immunity? How it enhances your all metabolism in the body and how it prevents the cancer. So last lecture was related to that. So Okay, okay. today let's start. Okay. So Mhm. as you know, what is diabetic patients or what is diabetes? Yes, definitely. Okay. So basically, you had an idea related to diabetes. Okay. Yes, So yes. moving to the today's lecture key, first we need to identify key what is and what is Mhm. the exact type of diabetes, whether the patient is type 1 or the patient is type 2, and what Mhm. is the symptoms of diabetes mellitus, and Mhm. explain relationship between the insulin to diabetes mellitus and appropriate nutritional diet, what kind of diet Mhm. they should take. Okay, so basically, if Mhm. I talk about diabetes, so most commonly we call it diabetes type 1, type 2. Other than this, one is your gestational diabetes or pregnancy related diabetes. Okay? So, gestational diabetes, when the female are pregnant, they sometimes be found here at the 8th month or at the so after 7 months, 6 months, or initially we see कि फीमेल का आपका डायबिटिक कंडीशन स्टार्ट हो जाता है ओके सो दैट इज द पार्ट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज ओके एंड देन इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी कि आपका प्री डायबिटिक स्टेट जहाँ पे आपको व्हेन वी चेक एंड वी फाउंड कि पेशेंट इज नॉट एबल टू tolerate okay so that is four conditions or four types of diabetes which we consider okay so diabetes mellitus is a group of serious and chronic disorders. Means in this, what we will see ki it will somehow going to in later stages. It is going to impact all functionalities in the body. Means आपका न्यूरोपैथी हो जाएगा, रेटिनोपैथी हो जाएगा, ठीक है? तो musculopathy and a lot of things we are going to patient का if you go into and check कि diabetic patient का complication क्या होता है तो हील नहीं होता है डायबिटिक फुट हो जाता है जिसमें जो है गैंग्रीन हो गया डायबिटिक फुट हो गया डायबिटिक अल्सरेशन एंड ग्रेजुअली वी हैव सीन we need to amputate that particular region where the infection has grown so much in order to save the patient's life okay so these are the basic general I am telling you okay, what is the chronic disorder affecting the patient's life okay so and this disorder is basically affect the metabolism of carbohydrate in human body जो कार्बो शुगर रिलेटेड है क्योंकि हम बोलते हैं डायबिटीज में पेशेंट का शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए इन जनरल तो शुगर कहाँ से हमें सारा डिराइव हो रहा है फूड में तो बेसिकली वी आर गेटिंग दैट शुगर फ्रॉम योर कार्बोहाइड्रेट फूड ओके सो द ग्लूकोज इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी जब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा तो हमने यही देखा ना कि एनर्जी में आपका ग्लूकोज है ठीक है फर्स्ट सोर्स कि हम कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से आपका एनर्जी डिराइव करते हैं ठीक है और वो ग्लूकोज वहां से जो शुगर आप बॉडी उसको यूटिलाइज करते हैं फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है एंड आपका जो क्रेब्स साइकिल है ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल वहां पे वो एनर्जी फॉर्म में सारा प्रोसेस चलता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में ये सारा प्रोसेस रिलीज होता है तो ये होल प्रोसेस फ्रॉम दैट फूड टू एंटरिंग इनटू द ब्लड टू द पर्टिकुलर रीचिंग टू द सेल जहाँ पे ये साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है वो कंट्रोल किससे हो रहा है वो आपका कंट्रोल होगा इंसुलिन से ओके सो अब बेसिकली अब डायबिटीज होने का कारण क्या है तो या तो बॉडी में जो शुगर बन रहा है जो ग्लाइसेमिक प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं या तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रहा है बॉडी उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रही है या फिर इंसुलिन की फंक्शनैलिटी जो इंसुलिन कंट्रोल कर रहा है वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाएगा इम्पेयरमेंट होगा ओके सो नाउ कमिंग टू हाउ इंसुलिन गोइंग टू अफेक्ट तो इंसुलिन सिक्रेट्स द बीटा सेल्स जो कि आपके पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक ग्लैंड का पार्ट होगा ठीक है वहां से क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होता है ह्यूमन बॉडी में एंड वो इंसुलिन जो है ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन में प्रॉपरली जो साइकिल है उसमें इफेक्ट करता है तो ग्लूकोज कैन नॉट accumulate
इनटू द ब्लड। ओके, तो जितना बना उतना तुरंत वो वहां से ब्लड से ले लेगा अपना, एंड वहां से फिल्टर आउट करके, और वो फिर जो है आपका क्या करता है कि सेल, पर्टिकुलर सेल पे नियर बाई सेल्स को देता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में यूटिलाइज करके उसको एनर्जी फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ नॉर्मल साइकिल। पर जब इंसुलिन का इम्पेयरमेंट हो जाएगा, दिस इज इंसुलिन एज अ हार्मोन। ओके, इंसुलिन का जब इम्पेयरमेंट हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन हो गया। हाइपर मीन्स ओवर एक्टिव, और ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज लेवल, ओवर एक्टिव शुगर प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो आप देखिए इंसुलिन है, इंसुलिन ग्लूकोज को कैसे आउटसाइड द सेल से वहां से बाइंड अप करके और पर्टिकुलर सेल बॉडी पे ले आकर के, जो भी एज यू नो व्हेन यू स्टडी द यू नो केमिस्ट्री, हमने पढ़ा था कि पर्टिकुलर सेल पे डिफरेंट आउटर स्ट्रक्चर्स होते हैं, या मेम्ब्रेन्स होते हैं, या केमिकल्स होते हैं, या पर्टिकुलर लॉक एंड की हाइपोथेसिस भी हमने पढ़ा था, जहाँ पे कैटलिस्ट का फंक्शनिंग हमने पढ़ा था कि पर्टिकुलर कैटलिस्ट मतलब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ही होता है, वो पर्टिकुलर, जैसे पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की चाहिए, वैसे ही पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वहां पे पर्टिकुलर कैटलिस्ट, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए जो है ना डिजाइन स्ट्रक्चर होता है, कोई और उसमें फिट इन नहीं हो सकता है। तो दिस इज, यू कैन सी कि हाउ दैट थिंग्स विल कम इन, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन दैट। तो वहां पे आपका पर्टिकुलर रिसेप्टर्स उसको अट्रैक्ट करेगा, वहां पे जो है इंसुलिन रिसेप्टर भी होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, और फिर वो जो है वहां पे इंसुलिन रिसेप्टर्स ओपन द ग्लूकोज चैनल, वो ग्लूकोज चैनल को ओपन करेगा। तो जितने भी आउटसोर्स ग्लूकोज होते हैं, मीन्स कि मैंने आपको क्या बोला कि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इट इज लाइक अ मैग्नेट, इंसुलिन इज लाइक अ मैग्नेट ओवर है। तो पर्टिकुलरली इंसुलिन ने क्या किया कि अपना जो वहां पे आके अपने पर्टिकुलर सेल रिसेप्टर पे ऐड हुआ, उसने क्या किया कि चैनल को, ग्लूकोज चैनल को ओपन किया। जैसे ही चैनल खुलेगा, गेट ओपन होगा, क्या होगा, सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है पर्टिकुलर सेल में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और वहां पे वो सेल उसको माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस के थ्रू जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के थ्रू उसको यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस तो ऑलरेडी हो चुका होगा, ग्लूकोज अब डिपेंड करता है ग्लूकोज किस फॉर्म में पहुंच रहा है, मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड। अगर मोनोसेक्राइड है तो वो डायरेक्टली आपका फिर जो है क्रेब्स साइकिल में सर्टेन फॉर्मुलेशन के बाद वो एंटर कर जाता है। ओके, 6 कार्बन कंपाउंड बना के। नेक्स्ट इज जो, अब पेशेंट को हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायबिटिक। ओके, so there are certain Ma'am, symptoms. Yes. uh, regarding that channel with the diagram which you have shown, it's a very nice Hmm. one. And I would Okay. like to add on like, is it like it's a lock and key enzyme system? Like if there is a defect in the Yes. lock or either the key, the Yeah. complex channel doesn't work properly. And second of all, there are some alpha, beta, and which one is there? Like there's some in pancreas. These are the three type of forward. I'm sorry to. Can you help me to recollect that one? There's one What alpha cells. means There is in the pancreas we beta have the cells? So alpha. basically, in case of glucose, the beta Mhm, cells are activated. In case of, if I talk about related to the pancreas, alpha mhm, beta cells are there. Okay, but in mhm. case of, if I talk about related to the whole process of, this, how insulin works, in this, I think so, beta cells are the active one. Okay. Yeah, alpha, beta, So, and somatostatins, right? No, somatostat. somatostatins are, so somatostatins are there. Yeah, somatostatins. And in that case, the when the glucose, like when we take the food, carbohydrates, and all the when there is a glucose in the blood level, and then I think this alpha blocker, these channels get activated. The beta blockers, sorry, the beta cells and the somatostatins, they this type 1, type 2, and type 3 and MODI is totally dependent on these different these Basically, channels. your pancreatic islets, they secretes the beta Islets cell of into the blood Langerhans. vessel. Yeah, yeah, Islets islets of of Langerhans. Langerhans, that Yeah. they secrete the beta cells into your blood cells and Mhm, blood vessels, and from there, this whole process will initiated. If I talk about in general, now, so this whole mhm, process is initiated from there. Okay, and mhm, mhm. if I talk related to what you are, delta cells are present, beta cells are present, and alpha cells are present. Okay. Al- So mhm, al- alpha, beta, and delta three cells are present in general. What you are talking, mhm, if I mhm,
discuss in detail. So these Mhm. cells are basically what happens ki your beta cells, basically I Mhm. told ki that is responsible for insulin. So your beta cell, basically when they turn into, in the presence of somatostatin, Mhm. that is somatostatin, I think so, that is a particular kind of enzyme that initiate Mhm. catalyst, I think so, that Mhm. initiate Mhm. the rate of reaction where the alpha cells uh, convert the glucagon. ओके, एंड Mhm. दैट Mhm. ग्लूकोज फर्दर जो है कैपिलरी नेटवर्क में वो यूटिलाइजेशन पार्ट पे वर्क करता है. Mhm. ओके, Mhm. Yes, yes, so yes. this is whole process of alpha cell with in Mhm. presence of glucagon, and they utilize them, and then they convert it into two types of, one is on the delta cell, another is on the beta cell, and Mhm. third is alpha cell. So they have Okay. the three basic categories, and from where, as per the need of human body, we just utilize them. Okay. Exactly. Actually, like long time back, there were no revisions and all. You all get goblets. No, no, You no. know. I can tell in this basically. आपका Mhm. जो ये क्या कहता है TCA cycle, if you remember ना, where I told you Mhm. like कि glucose 6 phosphate will be formed, Yes, and yes, yes, yes. then they convert it into glycolysis और pyruvate formation होगा, फिर वहां Mhm. पे जो है Mhm. certain amount of ATP रिलीज होगा और TCA और Krebs Mhm. cycle का इनिशिएशन होता है. Mhm. ये Mhm. होल प्रोसेस में जब चल रहा होता है इसी टाइम पे मीन बाय अनदर साइकिल में ये आपका Mhm. जो है लैंगरहैंस सेल्स का भी अनदर साइड पे ग्लूकोज वन और ग्लूट वन और ग्लूट टू के साथ रिएक्शन चल रहा होता है. ओके, Ah, glut सो 1, glut 2, glut 3. Yes. Now also हाँ, recollecting. यस, तो उसके Okay. साथ वहां पे रिएक्शन चलता रहेगा, एंड दे फर्दर ब्रेक डाउन इनटू चैनल्स ओपन होते हैं, इंसुलिन ग्रैन्यूल्स जो है वो एंटर करेंगे सेल के अंदर, और वहां पे फिर ये फर्दर जो है Mhm. एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये प्रोसेस स्टार्ट हो Exactly. जाएगा. ओके, Mhm. so alpha cells will be there, beta cells will be there, and delta cells. So basically, if I Mhm. talk about the insulin mechanism, basically I don't go into that much depth, because Mhm. generally what happens to majority of people doing this course, someone Mhm. is from medical background, it is easy for them to understand. But someone Yeah, is yeah. from not medical background, it will be very difficult for them to understand this whole process. Okay, Mhm. Mhm. that's why I made it little bit simple. So now I think so it will be little bit clear to you. Yeah, yeah. I'm from the medical background only, but like I'm out of touch with studies. That's the reason. Like I just wanted to recollect with you, sit down and like. Okay, okay, okay. So it's now Mhm. it's everything is clear or Yeah, reconnected yeah, yeah. now. Yeah, yeah, Okay, okay. yeah. So, Whenever I was sending the PPT, I'll try to add the that part of the yeah, yeah. Because mechanism. last year I think we studied. Yeah. I think in first year or second year physiology. Then after that in medicine Okay, and all everything. okay, Yeah. okay, okay, okay. So basically, this is how they work. Okay, and if I talk about symptoms related to that, so basically आपका Mhm. ग्लाइकोसूरिया होगा, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, पॉलीफेजिया होगा, Yeah. and weight loss होगा, Your weakness and your fatigue. your this one is not visible. Screen. Please take once. Now it's visible. I don't know what's wrong. Yes. Now it's no. It's good. Okay, might be there is some network issue. Okay, Mhm. so Mhm. so basic way जनरल जो in general हमारा होता है कि Mhm. initial में dips या three dips of the Exactly. आपका what is the Mhm. three dips of diabetes, तो वही आपका जो है Mhm. excessive urination होगा, excessive thirst होगा, और excessive appetite feel होता है. Okay, Mhm. then ग्लूकोज इन यूरिन डेफिनेटली आपको पता चलता है. ओके, वेट लॉस Mhm. होगा, वीकनेस होगा, Mhm. एंड फटीग. These are Mhm. the general symptoms when you're suffering initially from the diabetes. Okay. Mhm. Next Mhm. is unrecognized symptoms. आप वो symptoms जो generally patients को recognize नहीं होता है, जैसे कि Mhm. पैथीज आई टोल्ड यू, तो पैथीज में जब रेटिनोपैथी होता है तो आपका क्या होता है कि आपका कैपिलरी somehow they are going to affect your vision Mhm. part. So initially we have seen the initial cases of diabetes also कि Mhm. ब्लर विजन पेशेंट को शुरू हो जाएगा, तो पेशेंट सोचेगा यार मेरे को कोई इन जनरल ना आई रिलेटेड ऑप्था रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो दे डोंट Mhm. इजीली हिट फॉर डायबिटीज. ओके, Mhm. then Mhm. poor wound healing, so he will think wound is deep, that's why it's not healing.
So Mm-hmm. these are again the symptoms of your diabetes. Okay, skin irritation, Exactly. skin infection, recurrent Exactly. bleeding from gums or bladder infection. These are the common symptoms Mm-hmm. of diabetes. Okay, so these are unrecognized symptoms. Mm-hmm. Now, coming to etiology. Etiology of diabetes is unclear, still unclear. Okay, certain cases में आपके हम कहते हैं like genetically transferred. Certain cases में we have seen, कि this is at age related or lifestyle related or variations. So depending upon the case to case variation, we still say कि, the etiology is not that much clear, but it is believed to be hereditary. Okay. So Mm-hmm. environmental factors also play important role into the development of diabetes. Ki what kind of lifestyle you are, living into your day-to-day life, and how much of carbohydrate you are intaking, how much of glucose you are intaking, how much of sweetness you are intaking. Okay. And along with we have seen, the certain disease condition जहाँ पे viruses ने affect किया, in certain cases of or severe disease condition में we see कि viruses, bacteria, they leading to, the initiation of diabetes or obesity. Okay, obesity also may one of the, participate. I can say कि etiological factors we have seen कि obese people chances of getting diabetes or cardiovascular disease are very common among themselves. Again, you can see a lifestyle. Okay, so what is the treatment goals basically? So we need to keep an eye on your glucose level. Okay, आपका glucose level कितना है, बिकॉज मील रिलेटेड है, तो आफ्टर एवरी मील वी नीड टू चेक. ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी नीड कि अगर हम इनिशियली वी कैन कंट्रोल विद अ डाइट और एक्सरसाइज, इट विल बी गुड. इफ वी नॉट, देन हम ड्रग्स का भी यूज करते हैं इनिशियली, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द टाइप ऑफ डायबिटीज. ओके, सो control the blood glucose level, provide the optimal nourishment for the client or for the patient, prevent the symptoms, thus delay the complications. Okay. So basically complications में severe complications यही होता है कि आप diabetic foot is one of the severe or diabetic ulceration is one of the severe complications I can say, or pathies, whatever all three pathies are the severe complications of diabetes. Okay. So normal glucose level, if I talk about, it should be like 70 to 110 or 100 milligram per day. ओके, डिपेंडिंग अपॉन की फास्टिंग है तो आपका 70 टू 100 के बीच में रहना चाहिए. देन अगर आपका पोस्ट मील आप चेक करें तो इट वुड बी लाइक अप टू मैक्सिमम लाइक 140. ठीक है, और अगर आप मतलब बियॉन्ड, इफ यू सी कि इसके बियॉन्ड है तो डेफिनेटली यू आर somehow, but one day glucose level is high doesn't indicate you are diabetic. You need to monitor the things over the period of time, then we can see the patient is a diabetic. Okay. So, treatment regimen, if I talk about, in initial cases, diet alone can work, but in later phases, diet alone cannot work. Okay, so diet alone, along with diet with lower sugar levels or medications lowering glucose level in severe condition of the patient, too much high glucose level. In that scenario, we need to provide, the glucose lowering medicines. आपका जो है ग्लाइकोमेट हो गया या ग्लूकोनॉम हो गया. Other than this, we, a lot Metformin, of other, metformin is there. Other than this, we give you, sulfonylureas, other than this, we give injection forms also nowadays. कि आपका पेन फॉर्म में भी आता है इंसुलिन, या फिर जो है आपका, insulin. insulin we provide. Okay, so that combined with insulin, exercise combined with any of the above. Like exercise we prescribe, like, in case of diabetic patient, what we have to at least 30 minutes morning evening आपको walk करना है, depending upon कि what is the, obese status. तो अगर ओवर ओबीज है, बीएमआई लेवल बहुत ज्यादा है, इन दैट सिनेरियो हम क्या बोलते हैं कि मिनिमम 1 आवर मॉर्निंग इवनिंग आपको एक्सरसाइज करना है, या फास्ट रिग्रेस वॉक करना है, स्पीडी वॉक करना है, सो आपका चीजें मेंटेन रहे. ओके, एंड लास्टली आई टोल्ड यू कि मॉनिटरिंग ऑफ द ग्लूकोज लेवल इज वेरी नेसेसरी. ओके, सो ग्लूकोज तो आपको डेली बेसिस पे आपको ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे, डिपेंडिंग अपॉन की क्या सीवियरिटी है, वो आपको मैनेज करना ही है. ओके, nutritional management of diabetes, if I talk about, so maintaining the desirable glucose and blood lipid, fat levels in the body,
सो आप देख होंगे कि डायबिटीज पेशेंट को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, कि हम डायबिटिक पेशेंट को यही बोलते हैं कि आप जो है कार्बोहाइड्रेट कम करें, फ्राइड फूड ना लें, ग्रीन एंड हम्म लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा लें, एंटीऑक्सीडेंट्स को ज्यादा ऐड करें, शुगरलेस फ्रूट्स को ऐड करें। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स वी आस्क द पेशेंट टू ऐड। ठीक है, हम्म नाइट में हम्म हम क्या कहते हैं उनको कि आपका डिनर 6 PM पे हो जाना चाहिए। लेट नाइट में आप जो है ग्रीन टी या समथिंग लाइक दिस वी कैन ड्रिंक विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रूट और सैलेड्स। ओके, हम्म so such हम्म kind of diet we ask the patient. So क्या होगा कि whenever the patient is at sleep, he or she will be, easily able to maintain that glucose level. Okay, so हम्म अगर आप डिनर के बाद रैंडमली सो जाते हैं या उस कंडीशन में क्या होगा कि आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आपका ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो इट्स वेरी नेसेसरी लाइक वेन एवर वी आर टेकिंग आवर इवनिंग मील एंड वेन एवर वी आर स्लीपिंग, मिनिमम 2 or 3 hours का डिफरेंस होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा भी वॉक करेंगे, थोड़ा सा भी वर्कआउट करेंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर घर में, तो फूड विल इजीली डाइजेस्ट और आपका ग्लूकोज लेवल बहुत हाई नहीं होगा वेन एवर वी आर हम्म स्लीपिंग। ओके, हम्म अब इन पेशेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वेन एवर दे वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, healing is very slow. So हम्म whenever these patients are visiting into any clinic or something, हम्म initially if the treatment is very necessary, the surgery is very necessary, then only doctors will prefer कि हाँ आप, या फिर we ask the patient to maintain your glucose level first, आप उसको नॉर्मल करेंगे देन ओनली वी ऑपरेट। ओके, सो हम्म व्हाई वी आस्क द पेशेंट टू डू सो, बिकॉज हीलिंग बहुत ज्यादा डिलेड होती है and major हम्म surgeries, now so we go for very हम्म bloodless or major surgery, but initially क्या होता था, healing बहुत ज्यादा डिले होती थी, तो पेशेंट को सेव करना, क्योंकि other infections are there that causes हम्म the death, septic हम्म infections हो जाता है, septicemia whole body हम्म में, then organ आपके सारे affect हो रहे हैं, multiple organ failure and हम्म cardiovascular attack के बाद में पेशेंट का डेथ हो जाता था। Nowadays still the surgeries are very bloodless, and due to technologies and all, we can हम्म think for all हम्म these things. Okay, so हम्म again next is your maintain the optimal nutritional level, means body का जो डिमांड है वो भी देना है, बट हम्म मीनवाइल हमें कार्बोहाइड्रेट शुगर पे भी वॉच करना है कि बहुत ज्यादा ना हो, ईच एंड हम्म मेंटेन द हेल्दी डाइट। ओके, so हम्म that is one in general concern and to related to that. Okay, हम्म so next, डाइट एक्सचेंज लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल के मोस्ट कॉमन मेथड क्या होता है कि पेशेंट का हम डे टू डे रूटीन चेक करेंगे, पेशेंट अपनी डाइट में क्या ले रहा है, व्हाट द पेशेंट इज यूजुअली टेकिंग इनटू दैट। ओके, देन वी हम्म एक्सचेंज दोस थिंग्स विद अदर थिंग्स, जैसे कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर फूड का आ रहा है, तो उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आप पास्ता देंगे ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ठीक है, तो इस टाइप का फूड देंगे, आप उसको बोलेंगे कि यू कैन गो फॉर दिस idli and all this kind of things, or you can हम्म take poha or something like that। तो आप उसका हम्म इंडेक्स जो चपाती और इन सब से कम कर रहे हैं, और यू कैन डिक्रीज द क्वांटिटी ऑल्सो। ओके, हम्म तो आप क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे, उसके अलावा आप उधर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ऐड करेंगे उनकी प्लेट में। ओके, सो हम्म these lists were developed by the American Association in conjunction with American Diabetes Association. हम्म Okay, so ये जो थेरेपी एक्सचेंज लिस्ट है, ये आपको मिल जाएगा इनकी साइट पे जाके, और इन्होंने हम्म ये डेवलप किया है। ठीक है, एनी फूड इन ठीक द है लिस्ट कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर फूड टू द लिस्ट। ओके, सो एक्सचेंज हम्म में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेम डाइट एवरी डे दूँ, तो समवन विल गेट यू नो बोर्ड ऑफ दैट फूड। सो वी नीड टू एक्सचेंज एवरी डे ना, कि हम 7 डेज में 7 वेराइटीज का, बट वी नीड टू कीप एन आई कि हाँ कैलोरीज इंटेक कम हो रहा है, ग्लूकोज इंटेक कम हो रहा है, बट पेशेंट का जो भी रिक्वायरमेंट है, बॉडी को जितना एनर्जी मिलना चाहिए वो मिल जाए। देयर लिस्ट 3 मेन ग्रुप्स, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, मीट सब्स्टिट्यूट ग्रुप एंड फैट ग्रुप्स। ओके, सो दीज आर द 3 ग्रुप्स जो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है या एक्सचेंज करना पड़ता है, या इन 3 ग्रुप्स की क्वांटिटी पे हमें नजर रखनी पड़ती है। हम्म सो क्लाइंट कैलोरीज needs depend on, I told you कि what is the age group, what हम्म kind of activities he is doing, muscle हम्म mass या muscle weight कितना है, and size and rest energy expenditure, कि कितना आपका energy expenditure आप डेली
आप पर्टिकुलरली डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, ओके, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्या एज है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट ओल्ड एज में है, तो उसको बहुत ज्यादा डाइट दूंगी, ही विल नॉट एबल टू डाइजेस्ट। तो उससे क्या होगा, ओवर डोजिंग की वजह से उसको अगेन प्रॉब्लम होगी, डिहाइड्रेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, या बाउल में सर्टेन सिकनेस हो सकता है, बाउल सिकनेस, सर्टेन नॉजियाटिक फील करेगा, वॉमिट करेगा। तो दीज आर द थिंग्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट कि वो किस एज का है, क्या लाइफस्टाइल है, वेदर ही इज अ बेड रिडन, ही इज लिविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और ही इज एक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ दैट we basically provide the diet to the patient. Okay. So recommended diet 50 to 60% of calories should be in the form of carbohydrate, 40 to 50 from complex carbohydrate, and 10 to 20 from the simple sugar. तो ये बेसिक, क्योंकि हमें इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी पेशेंट को देना है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम 50 to 60% हम देंगे, बट what form we give that matters. Okay. तो आप देखते होंगे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स तो दे रहे हैं, बट कार्बोहाइड्रेट्स का हम ये चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल कि चपाती हटा देते हैं, ठीक है, राइस में भी वी आस्क देम टू ईट फॉर ब्राउन राइस और बॉइल्ड राइस। Okay, so why we ask? We are giving them everything, but the form is changed now. Carbohydrate उनको अभी भी मिल रहा है, but the form is changed now. Okay, so आपका simple फॉर्म में दे रहे हैं, सिंपल शुगर्स दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स को ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है, सिंपल शुगर इंस्टेंट एनर्जी रिलीज कर देगा। ओके, एंड easy to digest into the body also and utilized by the body also. Okay, and fat should be limited to 30% of the total calories. Okay, तो आपका टोटल कैलोरीज जितना है उसका 30%, अगर हम फैट और डीप फ्राइड फूड ज्यादा देंगे, तो व्हाट हैपेंस टू द पेशेंट कि वो स्टोर्ड होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज, और ग्लूकोनियोजेनेसिस तो वंस इन अ रेयर कंडीशन में हमें जरूरत होती है ना। तो दैट्स द सेकेंड। So protein should be provided from 15 to 20% of the total calories. Okay. So 15 to 20% आपको प्रोटीन देना ही देना है पेशेंट को। दैट इज अ डाइटरी रिकमेंडेशन। ओके, हाई फाइबर, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स और ये सब आपका जो इनटेक है उसमें इफेक्ट है, तो हाई फाइबर इनटेक शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंसुलिन needed because it lowers the glucose level. Okay, तो आपको हाई फाइबर रिच डाइट देना चाहिए। इट ऑल्सो अपीयर्स टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो आपका जो भी थिकनिंग हो रहा है या जो पैथीज हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है ये इफेक्ट करता है। ओके, सो हाई फाइबर्स में मीन 20 to 35 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर अ डे वी नीड टू गिव टू द पेशेंट एंड इंक्रीज द वाटर। ओके, व्हेन इंक्रीजिंग द फाइबर, तो फाइबर की फंक्शनैलिटी तभी अच्छे से वर्क करती है जब हम वाटर कंटेंट बॉडी में इंक्रीज कर देते हैं। पता चला कि हम पेशेंट को जो है हाई फाइबर वी आर प्रोवाइडिंग, बट मीनवाइल वी आर नॉट गिविंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो फंक्शनैलिटी उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा जितना अच्छे से अगर आप उसको ये वाटर भी इंक्रीज करके साथ में दे रहे हैं तो। ओके, सो दीज आर द unrefined cereals and lists are there कि आपका raw foods और cooked foods, इसमें भी मतलब और sources are different sources are there कि क्या देना चाहिए and क्या नहीं देना चाहिए। ओके, सो हम जैसे कि पेशेंट्स को बोलते हैं कि पोटैटोज के लिए भी आज की नहीं लेना चाहिए, ब्रोकली भी आज टू खा सकते हैं, और क्या कहते हैं कि फ्राइड पोटैटोज, या मतलब भी आज पेशेंट बेसिकली कि आप पोटैटोज का इंटेक से थोड़ा कम ही रखें, उसके अलावा कैरेट्स है, बीन्स है, और ल्यूटिस लीव्स हो गए, ये सब भी आज तो पेशेंट की वो अपनी डाइट में ऐड कर सकता है। अदर हम जो भी आपके प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उनको हम बोलते हैं सूप्स पेशेंट ले सकता है। ब्रेड्स में भी आज की आप जो है ब्राउन ब्रेड को प्रेफर करें या मल्टीग्रेन ब्रेड को प्रेफर करें, एंड I can say कि we go for nuts and all those things. So this is high fiber food जो आप पेशेंट को बोल सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में वो ऐड कर सकते हैं। अल्टरनेटिव ऑफ स्वीटनेस, क्योंकि आई नो कि जब किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो पेशेंट को उस चीज की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और ऑल्दो आप पहले शुगर शायद ना के बराबर ही खाते हैं, बट आई विल से वन डे कि नो आपको शुगर कल तो नहीं लेना है,
तो हम्म जो फील कि नहीं, आई शुड ईट, तो वो क्रेविंग को ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ स्वीटनेस वी कैन गिव। ओके, तो जैसे हम्म कि आप नॉर्मल पेशेंट को जब हम शुगर, व्हाइट शुगर की जगह आप ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं। और यू कैन हम्म आस्क द पेशेंट कि आपको खाना है तो फॉर एग्जाम्पल आप डेट्स खा सकते हैं, आप हनी हम्म यूज कर सकते हैं इंस्टेड वेन एवर यू आर मेकिंग एनी शेक फॉर देम। आप क्या हम्म करेंगे उसमें, सिंपल शुगर, व्हाइट शुगर या ब्राउन शुगर की जगह डेट्स ऐड कर दीजिए, तो डेट्स अपनी स्वीटनेस प्रोवाइड कर देगा उधर। तो हम्म नेचुरल सोर्स हम्म ऑफ शुगर भी मिल गया पेशेंट को, डेट्स के बेनिफिट भी मिल गए, हम्म फाइबर्स भी मिल गए। सेम टाइम व्हाट हैपेंस कि हमने कोई हम्म एडिशनल शुगर ऐड नहीं किया। ठीक है, हम्म तो saccharins has been, or sugar free nowadays people are using. So हम्म saccharins basically हम्म produces it shows to produce the blood cancer in rats हम्म and when used in large quantities. So saccharin alternative source of sugars we are using, and aspartate or sucralose. So these are the different types of sugar molecules जो आपको sweetness तो provide करेंगे but आपका body में कोई इफेक्ट, बैड इफेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो इंसुलिन मेटाबॉलिज्म में मे बी इनका डायरेक्टली कोई रोल भी ना हो। ओके, so alternative sweeteners we can give. Now Okay. exercise. Exercise हम्म I told you is very necessary. So type 1 हम्म एंड टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट को आपको एक्सरसाइज बहुत स्ट्रिक्टली उनको हम्म बोलना होता है। ठीक है, एंड इस हम्म तरीके से हम मील्स और एक्सरसाइज को प्लान करना है कि पेशेंट को हम्म हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। हम्म ओके, तो आपको क्या हम्म बोलना है कि बहुत ये नहीं करवा सकते कि बहुत हैवी जिमिंग करवा दी, बहुत हैवी। नहीं, आपको इनिशियली उनका डे टू डे मतलब पहले 20 मिनट्स वॉक करवाओ, फिर आफ्टर 1 वीक देखो कि 20 मिनट्स क्लियर अप कर लेगा, शुगर इतना बैलेंस्ड है। फिर भी रिक्वायर्ड हो तो फिर जब स्टेमिना इनिशियली बिल्ड हो जाए तो 30 मिनट्स करो, फिर 40 मिनट्स करो, फिर 1 आवर। तो इन दिस मैनर क्या होगा, पेशेंट की बॉडी भी उस एक्सरसाइज के साथ कैपेबल होती जाएगी एंड हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन भी इतना इजीली पेशेंट को नहीं होता है। ओके, सो this is one thing. Okay, exercise helps to improve the weight in case of type 2 and glucose level and cardiovascular system. Okay, तो basically in patients में हम क्या देखते हैं कि इसका disorder, तो एक बार डायबिटिक हुआ पेशेंट तो वी सी की सर्टेन पेशेंट अगर डायबिटिक है तो कार्डियक डिजीजेस भी कॉमन है। ओके, so that's why we ask the patient to do exercises and all. Consideration of the healthcare professional: if the diet is followed, medication is taken, time is allowed for the sufficient exercise, rest, one can live a near a normal life. Okay, so आपका बेसिकली क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट का इन्फेक्शन की वजह से, सेप्टिसीमिया की वजह से, फॉर एग्जांपल नॉर्मल एवरेज लाइफ, ह्यूमन एवरेज लाइफ इन इंडिया विल बी, अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में 65-68 ईयर्स और 58 to 68 ईयर्स हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं। ओके, एवरेज ह्यूमन लाइफ। ओके, तो अगर आपको नॉर्मल लाइफ जीना है लाइक 65-75 ईयर्स, तो आपको क्या करना होगा कि ये प्रॉपर तीनों चीजें अगर आप कंटिन्यूअसली यू आर डिसिप्लिन एंड यू आर फॉलोइंग यू थिंग्स ऑन अप टू मार्क, तो यू विल लिव अ नॉर्मल लाइफ। अगर आप नहीं फॉलो अप करते तो लाइफ तो आप भी जिएंगे, बट for example the next person is following this diet and everything and they are living up to 20 years, you will living up to like 12 years or 15 years maximum. So this is the basic difference. Okay, so emphasis and importance of eating all the prescribed food, and meals should be eaten at a regular time. Client should read the tables. Okay, so I'll show you the tables. Okay, so diabetic diet is used in treating the diabetic mellitus, metabolic disease, caused by the improper functioning of the pancreas and serious complications including the death. Okay, so diabetic patients में हमें यही पता है कि death is the last thing which we can expect. Okay, so diet, medication and exercises are the basic three things which we can follow. Okay, wait a minute, I'll show you one table. You can see that this is your meal plan you can take. Okay,
So this is Okay. in general meal plan 7 days का I have shared over here कि breakfast, lunch and dinner में how we can. तो हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट में आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मंडे देखना है कि 1 कप ओट्स मील, 1 टेबल स्पून ऑफ स्लाइस्ड आलमंड एंड 1 टेबल स्पून ऑफ ग्राउंड फ्लेक्स सीड्स. तो यू कैन सी कि फ्लेक्स सीड्स एंड आलमंड्स आपका जो अदर एंटीऑक्सीडेंट तो प्रोवाइड करेंगे ही, फाइटिंग इम्यूनिटी कैपेसिटी तो देंगे ही फ्लेक्स सीड्स और ये, प्लस सेम टाइम दे आर रिच इन फाइबर्स. Okay, oats meal again very good for health, rich in fiber, dietary benefit उसकी too much. Okay, then next में lunch में आप जो है sandwiches try कर सकते हैं. Over here they have written a turkey sandwich. We can go for normal wheat bread sandwiches with lots of veggies. Okay, Can you the can add lots of raw veggies. ma'am, can the patient go for bread also as well? अब चपाती से लो कंटेंट होता है तो वी आस्क फॉर द ब्रेड. ओके, बट वी आस्क कि गो फॉर ब्राउन ब्रेड ओनली इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर व्हाइट ब्रेड. ओके, Okay. क्योंकि ब्राउन Okay. ब्रेड में या होल व्हीट ब्रेड में प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ा अमाउंट ऑफ फाइबर भी होता है. बट मतलब मिक्सचर ऑफ रागी ज्वार एंड बकव्हीट को मिक्स यस, करके मल्टी अगर यस, कोई कुछ मल्टी मल्टीग्रेन्स, ब्रेड्स हाँ बार्ली मल्टीग्रेन्स। मल्टी मल्टीग्रेन ब्रेड्स अगर आप लेते हैं तो इट्स वेरी गुड. अगर नहीं हो पाता है तो आप व्हीट ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड्स को भी ले सकते हैं. दैट इज ब्राउन ब्रेड बेसिकली. सो विथ लॉट्स ऑफ आप वेजीज अगर उसमें ऐड करते हैं तो इट्स गुड. इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मेयोनीज और यू कैन गो फॉर ह्यूमस ब्रेड. ओके, humus is biologically grown and we can utilize that for eating also. तो आपका probiotic stomach का maintain करता है. और instead of this we prescribe you one chapati with one big bowl of pulses with one big bowl of this you can eat. क्या कहते हैं veggies, any green veggies you can, broccoli you can take, mixed veg you can take. Okay, but mixed veg maybe we need to decide the vegetables, or we can go for a bitter gourd, or so all these karela No, and all whatever you I can. can, sorry to interrupt you, ma'am. Whatever I can see, this food and these preparations and all everything is something totally different depending on the European culture, and it's from some Yeah, like because yeah, I told you na कि they have given a chart for this American based. American So one, this European chart one. is, yeah, this chart is from there. So Mm-hmm. American culture this, but in general, what we Indian used to go for is, I'm telling you the substitute of that. Okay, so Okay. over there they have written that. That's why I shared this meal plan. Mm-hmm. Okay. So in Mm-hmm. general, being in general, whatever the patient requirement, depending upon the geographical area, depending upon the patient personal preference, we just Mm-hmm. switch the diet. Okay, we just switch the substitute of the food. Okay, clear? Is clear, Abhishek? Yes, ma'am. Okay, okay. So I'll share the Indian diet plan also. Okay, with I'll ask one of my friends, she will prepare that. Okay, so you can. I had a gestational diabetic plan. Wait a minute, I'll share. Wait a minute. If I had, I'll share it. It's handwritten, but wait a minute, I'll share one. You can see this is an Indian diet.
Will you able to see this? No, ma'am. It's not visible. Yeah, somewhat now. It's visible. So you can see this is an Indian diet which I have prescribed it to one of the female who is suffering from, gestational diabetes. Okay. Okay. So this is one I have shared. You can see again. See what we have given a brown bread and we have given almonds or apples or dalia or one bowl of dal, whatever, the pulses or everything will be substituted. Okay. So we have given everyday morning breakfast. You can see one day I have prescribed poha, another day we have given sprouts or paneer, then sprouts, brown bread and green tea. This is how the moong dal chila and anything you can prescribe, depending upon the patient. क्योंकि आपका डायबिटिक है प्लस पेशेंट साथ में जो है आपका मीन वाइल जो पेशेंट का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बॉडी का जनरल, क्योंकि शी इज अ प्रेग्नेंट फीमेल, तो हमें मिड डे मॉर्निंग एंड मील्स नंबर्स ऑफ मील्स को भी इंक्रीज करना था पेशेंट को, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी जनरली एज अ पेशेंट एक बार में आपको नहीं खाना है क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। आप पेशेंट एक बार में खा भी नहीं पाता है क्योंकि बेबी उसी वोम में जब ग्रो करता है तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है कहीं ना कहीं ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड एक बार में नहीं आप जल्दी फुलनेस फील होता है, तो आपको क्या करना होता है कि 2.5 आवर्स और 3 आवर्स में मील्स को डिवाइड करना होता है, तो नंबर्स ऑफ मील्स विल इंक्रीज इन दिस सिनेरियो। मिड 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 डे मील्स और ये सब आपको ऐड करना पड़ेगा उसमें कि आपको नंबर्स ऑफ स्नैकिंग वी नीड टू add up. Okay. So you can see this is an Indian diet which I am showing over here. कि आपका हम Indian diets में female is 8 months pregnant, okay, with the diabetic gestational diabetes, and the blood sugar level varies, okay. Someday it will be like 140, 150, or 127, or sometimes it will be like 200. So in that scenario, we have given this diet to the female, okay, and she is not means she performs a daily day-to-day activities, so not too much active, not too much sedentary. And if I talk about her BMI, so current weight is during the pregnancy will be somewhat near about 81 kgs, and height is near about 5.4. Okay. Mhm. So on the basis of all these She's calculations, this is she's she's vegetarian. yes, she is pure vegetarian. Okay. So on the Okay, because I basis cannot. of that, Okay, I I cannot find cannot see any kind of, fish, that aspect chicken. or some, nothing is over there because she's purely Ma'am, vegetarian. you have missed idli. Morning idli is good. If she don't like it, that's why I didn't add this. Priyanka will Okay. feel very bad. She don't eat early and all. No? That's why I didn't add because we need to ask the patient what is the choice of your taste. So when they said, "I don't eat this," so I don't add. Okay. Okay, okay. On the basis of that. Okay. So, this is a diet plan for Indian patients. Okay, now moving to the next diet, I'll come to the pregnancy one. Okay, Mhm. so let's move to till now any doubt related to a diabetes patient and their diet plan. No, ma'am. Just go on internet and just try to get certain samples of whatever you are studying. Just go on internet, try to get certain diet plans. There are a lot of sources they used to generally put over there. You can Ma'am, go and check. I want to ask you regarding Yes. fish. Like, for example, in the coastal region, the people, those who are from the coastal region, like you can say, from Bengal, Andhra Pradesh, or Western region, Mm-hmm. coastal region, is like Mumbai or something. So there are two Uh-huh. type of fishes, right? Like one is sweetwater fishes, and what is sea, like saltwater fishes. That is sea fishes, right? Mm-hmm. Or you can say marine fishes or something like. Mm-hmm. So seafood and normal river water. So, which one is more preferable to have for diabetic patients? Like, for example, can we give them river water fishes, sweet water fishes, or we should be preferably giving tuna or salmon, or which is more rich of vitamin, yeah,
what is that called? D3D something like that. Basically salmon and all these are good for very good for health. ओके, सो आप डाइट हम्म, भी करते हैं तो वी प्रिस्क्राइब देम, ओके, क्योंकि हाँ, इसमें जो है बेसिकली बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है, प्लस न्यूट्रिशन फैट वाले। कंटेंट भी ऐसा, हाँ फैट कंटेंट टू अनदर फिशेस आर वेरी लो, ओके, सो हम्म, this is a basic, we can prescribe salmon and all, but if I check in general, तो there are another, basically, जैसे कि आपका cod होता है, tuna होता है, sometimes we give such kind of fishes to also, to the हम्म. diabetic patients or, okay, So so omega these 3 are and omega the, 6 are more in yeah, this like omega 3, salmon. omega 3 fatty acids. Yes, omega 3 fatty acids are healthy fatty acids. That is हाँ, very, reduce inflammation or your cholesterol level also. inflammation. That's why we Yeah, prefer. yeah. Yeah, that's why we ask such kind of, fishes to the patients. So basically, if I talk, so cod are there, tunas are there, and there are certain other Fish fishes. liver oil capsules. Can we recommend the fish liver oil capsules Yeah, like if seven seas needed, cod liver oil, halibut liver oil? yeah, if needed, Mm. we generally prescribe the patient. Okay, so So diabetic miracles. patients can go with marine seafoods as well as the sweet river fish like rohu, katla. Like they can have variety, or like it should be restricted one. Like they should not go for chital, Restricted. pabda. It should be restricted, because Uh, basically depending upon the fish, we need to check कि what is the nutritional content of that particular fish. जैसे कि mhm, सैल्मन में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ठीक है, उसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट हेरिंग करके एक फिश होता है, ठीक है, जो कि mhm. डायबिटिक पेशेंट के लिए एक्सलेंट चॉइस हम मानते हैं, बिकॉज दैट फिश इज वेरी रिच इन विटामिन डी, ओके, सो Which आपका one? Which जितना one? भी बोन, हेरिंग करके है, हेरिंग, कौन सा? एक He फिश होती है, HERRING, हेरिंग, ठीक herring. है, Okay. तो हाँ Okay. हेरिंग, तो ये हम डायबिटिक पेशेंट को बहुत मोस्ट चॉइसेबल फूड हम मानते हैं, अगर हमें Mhm, पेशेंट को फूड देना है तो बहुत ज्यादा विटामिन डी सोर्स है, ओमेगा फैटी फ्री है, एंड mhm. इट विल बी क्यूरेबल कंडीशन, और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी बहुत सारी डिफिशियंसीज को ओवरकम करता है, ठीक है, It's a sea तो water. डीएचए हो गया, It's a marine हाँ water or it's a एग्जैक्टली, fresh water? exactly. I'm vegetarian, so I don't know the is अच्छा it अच्छा. sea water, but basically it's a sea. I think so. Basically it's a sea. And Mhm. one more which is from Atlantic, जो कि Miracle है. I think so. Miracle भी है, जो कि Merkel. Atlantic, Yes. हाँ Miracle, Atlantic Merkel. Ocean का है. Yes, Mackerel, Atlantic Ocean का है. mackerel बोलते हैं. हाँ मैक्रेल विजय, Mackerel. बेसिकली जो अटलांटिक ओशन का है, ठीक है, तो हम्म. बेसिकली आई थिंक कि हम ओशन बेस्ड फिश भी पेशेंट को दे रहे हैं, इट्स नॉट ऑलवेज की रिवर वाटर, हम ओशन बेस्ड फिश भी दे रहे हैं, बट वी नीड टू चेक कि उसका हेल्थ बेनिफिट क्या है, ठीक है, जैसे कि एक होता है सैडन्स करके है, सैडन्स, Sardines. SARDI, Sardina. हाँ Sardina. Sardina. सैडन्स, हाँ Then one is सैडन्स the के फिश को San देते हैं, Jose. There is one San Jose. Those things सैडन्स you का get. जो बेनिफिट, सैंडिस का Uh, इफ आई चेक ना, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये गुड फॉर, वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थी पेशेंट्स ना, अगर आपको हेल्दी हार्ट mhm, चाहिए तो हम उन पेशेंट्स को ये देते हैं, इट्स वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हाईली रिच mhm, इन प्रोटीन, तो such kind of fishes depending upon the patient, because prescribing any kind of fish to the patient we need to check कि patient का exact scenario क्या है और फिश mhm, का एग्जैक्ट सिनारियो क्या है, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटीज, क्योंकि रिवर वाटर फिश भी वी प्रिस्क्राइब और mhm. सी वाटर फिश भी वी कैन प्रिस्क्राइब, ओके, बट डिपेंडिंग अपॉन टू व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि हम नहीं प्रिस्क्राइब करते, वी प्रिस्क्राइब, ओके, Okay. तो डिपेंडिंग अपॉन कि फिश की क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि वो बॉडी को क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, कितने टाइम में डाइजेस्ट हो रही है, कितना फैट है, बेसिकली हम फैट ही चेक करते हैं, एंड किस टाइप अच्छा. का फैट है, एंड कितना आपका बॉडी में उसका यूजफुल सोर्स वो दे रहा है, ठीक है, सॉल्ट Okay. इनटेक कितना है, अगर हम ये सी वाटर फिश दे रहे हैं तो सॉल्ट Mhm, भी देखना पड़ता है कि आपका जो है कितना mhm, सॉल्ट इनटेक होगा, ये सब हमें पहले से mhm. उसमें देखना पड़ेगा, okay? Okay. तो जैसे कि आप मैंने एक बोला था मेरिकल, मेरिकल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि एंटी क्लॉगिंग भी होता है, ओके, अच्छा. तो आर्टरी आर्टरी क्लॉगिंग और इन सब में उनको जो है क्लॉगिंग को लोअर करने में ये बहुत हेल्प करता है,
ठीक है। तो वहां पे अगर Okay. कोई एलडीएल की क्लॉगिंग हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, तो उसको वो लोअर भी करता है। तो उसका एक मेडिकल का ये भी प्रॉपर्टी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B12, ये सब तो मल्टीपल फिशेज में आपको, D3, ये सब तो मल्टीपल फिशेज में मिलेगा। बट इसका Hmm. एक प्रॉपर्टी यही होता है कि ये जो है आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। सेकेंड थिंग ये क्या करता है कि आपका आर्टरीज में जो क्लॉगिंग होती है उसको भी हाँ रिमूव करता है। ओके। मैम, उसका सो सप्लीमेंट्स अगेन, में हम कौन सा फिश लिवर ऑयल हम ले सकते हैं कैप्सूल्स के हिसाब से? 7 सीज कॉड लिवर ऑयल या ऐसा कुछ रिकमेंडेशन कर सकते हो आप? हाँ, डिपेंडिंग अपॉन कि वी रिकमेंड कि आप कॉड लिवर नहीं, ऑयल नॉर्मल में नॉर्मल, इवन नॉट ओनली डायबिटिक बट लाइक फॉर एवरीवन, लाइक सपोज नाउअडेज दिस देयर इज अ हाई रेट ऑफ पॉल्यूशन एवरीवेयर, सो ओमेगा 3 लाइक फैटी एसिड का एक वो आता है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। वी गिव यूजुअली सप्लीमेंट, इफ आई टॉक अबाउट, तो हम देते हैं, लेट मी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कैप्सूल है जिसका हेल्थ बेनिफिट जो है ना बहुत अच्छा है। एंड आई because nowadays in यूजुअली, Delhi there's huge this pollution factor is has increased a lot, and staying in Delhi it's really challenging to breathe now. So what do you suggest us to go for, like, to a keep lot of, ourselves safe? soft gelatins with vitamin E. You can go for Megle E 10 करके capsules है, you can go for this one, or Dr. Morgan का भी है omega 3 fatty acids, so you can Mhm. check, I'll check, okay, depending Mhm. upon अभी currently में जो दिल्ली का scenario है, in that scenario you need to go for certain respiratory exercises, wear Mhm. your mask, go for Mhm. detoxification of your respiration, or detoxification drinks will help you a lot. Add a lot of antioxidants into your diet. These are the basic things right now as per the Delhi scenario you need to add. Okay. Antioxidants like amla, You can go for vitamin amla, you C. can go for vitamin Mm. C, or you can, nowadays oranges are there in the market, guavas are there in the market. You can go for this. You can go for broccolis also nowadays. Broccolis, yes, yes, yes. Yeah, so it's Jaggery, what good. about Uh, jaggery? Good Jaggery quality is jaggery. for respiratory. For respiratory, jaggery is very good. But Very whenever good. you're moving outside the houses, you can Mhm. add certain types of air purifying plants into your houses. So Snake it will plants, money plants. actually, Yes, yeah. yes. So you can actually purify the air inside your houses or inside your bedroom. But in that scenario, if too much of smog is there, so you need to, once in a week, you need to clean that plant by spraying the water. Water, Okay, yeah, yeah. spray the water and use a cotton or some thin tissue paper to clean the leaves. So if the clogs leaves का जो force होता है, अगर वो clog नहीं होगा, तभी हाँ, oxygenation होगा, keep purifying of the air into your room. Okay, अगर सही वो बात है। force dust से clog हो गया, तो वो purification नहीं of चाहिए। air नहीं करेगा। ठीक है, तो सही आपको सही। twice in a day आपको leaves को भी clean करना चाहिए। ओके, ठीक है। ठीक है। हम सो टैक्स भी पे करें, सब कुछ हम भी करें, सरकार कुछ ना करे। nahin, they were increasing the size of chimneys. Okay, they are mandatory. There is, in every setup of a chimney, they ask to add a layer of filters over there. तो आपका क्या करता है, वो चिमनी के ऊपर जो स्मॉग ग्रो कर रहा है उसको जो है वो डाउन करता है. They are going to हम्म, add certain amount of air purifier into the public areas and everywhere, so they can, on roads and everywhere, they are going to decrease the number of vehicles on road, and हम्म, asking the companies to allow the people to work from home. So आपका transportation decrease करेगा, but हम्म, definitely the issue is related to the agriculture, so they need to find out any other method to burn this parali or whatever the left of these, no? हम्म। So once they get another idea to burn or to dump this, But as per the my opinion, remaining they part. should go for a lockdown for at least a week now. Like at least a week now, they should lock down because transportations and because even if you make an They odd and ask the even system. companies, they ask the companies, to, lower Hmm. down their working capacity on floor, the working people capacity over the floor. They ask the people to reduce that, Work from okay? home. But work from home or however the companies are doing, I don't know. But Uh-huh. you should, there are certain sectors they cannot, like hospital and all sectors, they cannot allow that.
So they ask Hmm. the parents. So basically, they are taking actions and they shut down the schools below 5. Okay, कि Hmm. क्लास 5 के नीचे सारे schools को close कर दिया गया, students को घर से बोला है. Okay, Hmm. अब 10-12 standards को नहीं बोल सकते हैं. So they have taken different measures, but the main issue is this कि This this perhaps the burning smog because of the from farming. Parali, whatever the remaining stems of are, I think so. This is rice cutting season. So to be rice के बाद का जो stem बचा हुआ उसको burn हाँ करने की उसको वजह से जो तो हाँ, smog create हुआ है. Okay. So हम्म, other than this, they are taking a lot of other initiative also. But being the citizen, our initiative is to this one thing. कि government alone cannot do this. Okay, yeah, absolutely. we are the persons, so we need to think कि we should plant more trees. We should Hmm. live certain kind of lifestyle, like go for public transportation instead of using private or something, or go for pulling. If you're using private, you can opt for pulling, car pulling, like three, four Exactly. people going to one destination. So this will definitely decrease the amount of fuel. Second thing, decrease the cost on your pockets also per person fuel. So and very beneficial for environment. So such kind First of of all, things we they should. have started also to banning this BS4 and BS3, BS5 diesel and all everything, so that only the BS6 vehicles will be running on the road. But hardly there someone is taking listening this one. But now they have implemented 20,000 fine also as well, I There is no other option, so they need to. think. So now coming to next part, one more diet we need to discuss. Okay, so in tomorrow's class we will study then food adulteration and adulteration act. Okay, so Mm. okay, so this is next part is your pregnancy related. If I talk in general, so pregnancy is generally, basically, if I talk about such kind of things, once in a lifetime happens with every female, and this is very critical period. So, what kind of diet? Because the miscarriages and all these things happens very frequently if you don't take proper care of yourself. Okay, so identification of the nutritional needs during the pregnancy and lactation is very important. Okay, modifying the normal diet to meet the needs of pregnant and lactating women. Okay, so these are the basic objectives. So, diet during the positive nutritional supplement for the pregnant promotes the successful outcome and increase the health of mother and infant. Okay, so why we need to pay important, care on mother's diet, because mother is feeding the child also, particular infant also. Okay, तो आपका डाइट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बेबी का जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसको ग्रो करना है, उसको मतलब फंक्शनैलिटी जो भी उसको जितना भी बेबी का ग्रोथ होगा वो मदर की डाइट से ही होगा. So the protein requirement is increased by 20% of pregnant women over. Okay. No need to increase the vitamin A. Excess of vitamin A is a birth defect. Okay. So same things, if we are giving excess of anything, it will cause the defect also. Okay. So अगर vitamin A को over दे दिया female को तो आपका birth defect होता है. Okay. Vitamin D required 10 milligrams, and vitamin E require 5 milligrams, and vitamin K requirement is 75 to 90 milligrams depending upon age. Okay, so different age group of female का हम different amount of vitamins का prescription करते हैं. Okay, then protein female growth के लिए बहुत important है, and enlargement of uterus, mammary gland and placenta. ओके, तो ग्रोथ टिश्यू जितने भी होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि प्रोटीन इज द मेजर चंक. आपकी बॉडी में कुछ भी ग्रो कर रहा है, प्रोटीन चाहिए ही चाहिए होता है. तो अगेन एनलार्जमेंट हो रहा है बॉडी में, तो प्रोटीन रिच डाइट हम यूजुअली फीमेल को प्रिस्क्राइब करते हैं. ओके, सो एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस हो रहा है, मैमरी ग्लैंड भी सेम टाइम बढ़ रहा है, एंड प्लेसेंटा भी ग्रो कर रहा है. ओके,
So, increasing the maternal circulating blood volume, formation of amniotic fluid, storage of reserve for labor, delivery and lactation. So, these are the basic things जो कि आपको प्रोटीन का कहाँ कहाँ नीड पड़ेगा. ओके. फैट्स जिस टाइम पे फीमेल ग्रो करती है, वेट ग्रो करता है, तो एसेंशियल फैटी एसिड्स का बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नर्व्स एंड ब्रेन टिश्यू. ओके. सो बेबी के जितने भी नर्व सेल्स होंगे या ब्रेन टिश्यूज बनेंगे, उसमें आपका फैटी सेल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके. कार्बोहाइड्रेट्स should take in at least 125 gram per day for adequate supply of glucose एनर्जी के लिए. ओके. तो दिस टाइम पे फीमेल्स को जो है थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट इंक्रीज कर देना चाहिए. लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स आर नॉट रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड. ओके. द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल वाटर सॉल्युबल विटामिन इंक्रीजेस. विटामिन सी आपका इंक्रीज कर जाता है. ठीक है. जितना भी वाटर सॉल्युबल है आपका सारा इंक्रीज कर जाएगा. ओके. कैल्शियम रिक्वायरमेंट बॉडी में इंक्रीज कर जाएगा. आयरन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जाएगा. जिंक, आयोडीन एंड सिलेनियम, इन सब का भी रिक्वायरमेंट बॉडी में इंक्रीज कर जाता है. यूजुअली इन इंडिया व्हाट वी सी कि एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन, कि आपका एनीमिया या ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमन होता है. तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम कैल्शियम, विटामिन डी एंड ये क्या कहते हैं, आयरन फीमेल्स को प्रिस्क्राइब करते हैं. ओके. टू ensure that nutritional needs are met and the needs of pregnant women are encouraged. Okay, so तो हम क्या करते हैं कि हमारा बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होना चाहिए कि फीमेल का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए. ठीक है. और उनको एनकरेज करना चाहिए हमें कि वो वेजिटेबल रिच या प्रोटीन रिच या फ्रूट अपने डाइट में ज्यादा ऐड करें. ओके. तो द डेली विटामिन्स, मिनरल्स और आपका जो भी बॉडी रिक्वायरमेंट है वो पर्टिकुलरली उन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आपका जो भी ग्रेन्स है उनसे मिल जाए. ठीक है. तो मेरा मानना इन जनरल कि whenever anyone is pregnant or suffering from any disease condition, हम अगर उनको डाइट से वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट देते हैं तो नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ बॉडी साइकिल विल बी मेंटेन. बट अगर हम उन्हें सप्लीमेंट देंगे तो बॉडी का वो जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है वो कहीं ना कहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन की बात करूं तो Fe2, Fe3 दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब इंटरचेंज करके हम उसको यूटिलाइज करते हैं. कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम जनरली बॉडी से एज सच यूटिलाइज नहीं होता. वो आपका जो है कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी. ठीक है. तो वो नॉर्मल मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल चल रहा है. ठीक है. बट अगर हम सप्लीमेंट देते हैं तो नाउ इन डेज हम मिक्स सैचेस और मिक्स सप्लीमेंट देते हैं कैल्शियम विद विटामिन डी. तो आपका रेडीमेड फॉर्म में आप दे रहे हैं तो हाफ साइकिल तो आपने पहले से ही हटा दी. तो बॉडी को अगर मेडिसिन पे आप उसको डालते हैं तो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनैलिटी कहीं ना कहीं हैम्पर आउट होती है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हैम्पर आउट होता है. और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि बॉडी को नॉर्मल मैकेनिज्म की जो आदत होती है वो कहीं ना कहीं मिस्ड आउट होती है. उसको डिपेंडेंसी आउटसाइड सोर्स पे ज्यादा होने लगती है. ओके. So that's Mhm. why in my view, we should maintain the normal physiological process of body by taking all those nutritional supplements from diet. Okay. So in that scenario, we need to maximize the nutritional intake through diet and avoid alcohol. Everyone knows, and limited intake of caffeine. So during the pregnancy, after smoking, अल्कोहल और कैफीन तीनों पे हम पेशेंट को बोल देते हैं कि आप इसको अवॉइड करें. ओके. सो व्हाट इज द बेसिक कंसर्न ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि बेबी का वो और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो नियर बाय है. ठीक है. तो जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा तो व्हाट हैपेंस कि नॉजियाटिक फील होगा. पेशेंट फीमेल्स को नॉजियाटिक होता है, हार्ट बर्न होगा. ठीक है. उसके बाद से आपका जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है. ठीक है. एनीमिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एक्सेसिव वेट गेन इज वन ऑफ द कॉमन थिंग. उसके बाद से अल्कोहल, कैफीन और ये सब हम पेशेंट को ऑलरेडी जो है मना करते हैं. ठीक है. तो पेशेंट को ये सब लगता है कि यार ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ. एंड
पीका इज यूजुअली क्रेविंग ड्यूरिंग द अनयूजुअल क्रेविंग, फीमेल्स का जो इन हम कहते हैं ना कि यार ये फीमेल्स का जो अनयूजुअल मूड स्विंग और क्रेविंग्स होता है, वो जो है उसको हम टीका कहते हैं। ओके, सो प्रैक्टिसिंग ऑफ क्रेविंग सब्सटेंस विथ लिटिल और नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो फीमेल्स का डिमांड होता है गोलगप्पे खाने, इमली खाना है, या पर्टिकुलर हर फीमेल का डिफरेंट डिमांड होता है, किसी को स्वीट्स खाना है, किसी को आइसक्रीम खाना है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट। ओके, सो नोजिया यूजुअली जो इनिशियल साइन होता है, मॉर्निंग सिकनेस जो होगा वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलेगा। एंड 50% फीमेल जो है यूजुअली इसको स्पेशली आपकी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो सफर ही करती है। उसके बाद से डाइटरी मैनेजमेंट, ये तो क्या कहते हैं, ड्राई टोस्ट ईट करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ। तो आप कैसे मैनेज करोगे पेशेंट को, अगर उसको नोजियाटिक है वो है, तो हम क्या कहेंगे कि एक बार में चंक नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाओ बॉडी ताकि डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, और बहुत स्मेली फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मे बी सर्टेन वी हैव सीन फीमेल्स का काफी फीमेल्स का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी की स्मेल की वजह से, ऑर्डर की वजह से उसको वॉमिटिंग इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, और लिक्विड्स को व्हेन वी आर टेकिंग द मील, हमें जो है लिक्विड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपको फुलनेस देता है। ठीक है, क्लियर? सो नेक्स्ट इज योर hypermesis gravidum, क्योंकि when the nausea becomes severe or life threatening, तो वो आपका ये कंडीशन हो जाता है। ठीक है, ये hyper and can result to the alteration in the fluid electrolytes and weight loss फीमेल्स का शुरू हो जाता है। तो आप देखते होंगे काफी फीमेल्स का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट लॉस होता है, एंड इन सीवियर कंडीशंस में उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। काफी फीमेल्स को या बहुत रेयर कंडीशंस में ये कंडीशन जो है वो लास्ट मंथ तक भी चलती है, इन 8 मंथ 9 मंथ भी फीमेल इवन लिक्विड तक डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ओके, कॉन्स्टिपेशन caused by the relaxed gastrointestinal ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन और ये सारे हार्मोन जब रिलीज होते हैं फीमेल की बॉडी में, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा कई बार हम देखते हैं फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इन दैट सिनेरियो हमें क्या देना है, तो हाई फाइबर डाइट पेशेंट को देना है। एंड इनिशियली सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, कि और सेफ एक्सरसाइज, ये नहीं कि बहुत हैवी वेट लिफ्ट नहीं, बहुत माइल्ड एक्सरसाइजेज वी आस्क द पेशेंट टू do, and drink 8 glasses of water per day. Okay, heartburn होता है बेसिकली, एंड डाइटरी मैनेजमेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंट मील्स के लिए हम पेशेंट्स को कहते हैं, और रिलैक्सेशन, अवॉइड स्पाइसी फूड, ग्रीजी फूड, लिक्विड्स विथ मील, ये सब हम एटलीस्ट पेशेंट को मना करते हैं। ठीक है, और कहते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद ही उसको लेटना चाहिए, एंड 2 hours बिफोर एक्सरसाइजिंग, एंड these are the basic things which we ask the patient to do. Okay, इसके अलावा क्या होता है, हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी रिलेटेड, जो कि हम फॉर्मली क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाए अगर, तो उसमें क्या होता है कि फीमेल जो फीमेल होती है उसका मिसकैरेज भी हो जाता है। तो फॉर्मली कॉल्ड प्रीक्लेम्सिया और टॉक्सीमिया, characterized by high blood pressure, presence of protein in urine, edema in third trimester. Okay, may progress into the elliptical phase with convulsions, comma, and possible death of mother and infant. So infant का तो commonly we have seen, mother का भी काफी cases में हमें दिखता है। Okay, so pregnancy induced hypertension को हमें avoid करना चाहिए। Okay, so high incidence during the first pregnancy, ये बहुत commonly हम देखते हैं कि जो है I have seen a lot of cases जहाँ पे हमें प्रीक्लम्सिया दिखता है इनिशियल स्टेजेस में, आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी में काफी केसेस में दिखता है। ओके, सो मल्टी फीटल प्रेगनेंसी, मॉर्बिड, मतलब फीमेल थोड़ा सा बहुत ज्यादा ओबेस नहीं, बट मॉडरेट अमाउंट ऑफ ओबेसिटी मदर्स में भी दिखता है, एंड दोज हु हैव विथ इनएडिक्वेट और प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट्स में ये कॉमन है। ओके, next, I told you कि anemia is the most common conditions in the females in India, कि उनका anemic condition during the pregnancy बहुत ज्यादा रहता है। तो anemia है तो आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम है बॉडी में, और ब्लड वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी डाइट
बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी, येलोइश कलरेशन ऑफ द स्किन होना शुरू हो जाएगा, आई बॉल्स में आप देखेंगे नीचे जो है, आई रीजन में, व्हाइटिश रीजन में आप देखेंगे कि नीचे जो है येलो डिस्कलरेशन शुरू हो जाएगा, वीकनेस होगा, फैटिक होगा, दीज आर द कॉमन कंडीशंस, ओके। So, and in India, it's very common amongst the female. Or folate deficiency may lead to the megaloblastic anemia into the female. Okay, तो megaloblastic anemia में क्या होगा कि आपका जो ब्लड सेल्स होती है वो प्रॉपरली जो है वो जो शेप बनना चाहिए कॉनकेव वो नहीं बन के सिकल सेल शेप बन जाते हैं. ओके, सो दैट वाज तो इनको प्रिवेंट करने के लिए फीमेल्स को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन लेना चाहिए. So the dietary requirements for the female during the pregnancy should be planned the diet. Okay. So gestational diabetes और इन सबको अक्सर बहुत commonly हम देखते हैं कि 8 months में 9 months में या after 6 months it's very common कि आपका gestational diabetes हो जाता है. Okay. So routine screening हम करते हैं patients का 15 days पे 7 days पे और उनको बोलते हैं कि 15 days पे आप लैब से टेस्ट करवाइए एंड पर डे आप घर पे अपना ग्लूकोज लेवल मॉनिटर कीजिए. ओके, एंड वो अपना चार्ट बनाते हैं पेशेंट्स को एवरी 2 टाइम अ डे हम उनको बोल देते हैं कि आप ऑब्जर्व करिए और उसके हिसाब से सर्टेन टाइम्स इफ नीडेड तो हम उनको वही ओरल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देते हैं. ठीक है, और आर्टिफिशियल स्वीटनेस हैव बीन फाउंड टू सेव ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो हम उनको बोल देते हैं कि आप जो है शुगर फ्री यूज कर सकते हैं. ओके, सो अगर प्रेगनेंसी में मेन फैक्टर क्या होता है कि आप प्रेगनेंसी किस फेज में है फीमेल की लाइफ में. अगर एडोलेसेंस फेज में है तो बॉडी का रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन का डिफरेंट होगा. ठीक है, अगर आप मीन्स 25 की एज में है तो बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग होगा. बट आफ्टर 35 इफ यू आर प्रेग्नेंट तो बॉडी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा अलग हो जाता है एंड उस केस में कॉम्प्लिकेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ओके, so the pregnancy during the adolescence must meet the needs for her growing body and needs for the fetus. So अगर pregnant हो गई female at the age of 17 at the age of 18 क्योंकि fertility इस stage में बहुत ज्यादा होती है पर वो फीमेल खुद भी ग्रोइंग फेज में है साथ में उसके साथ एक बेबी भी ग्रो कर रहा है तो उसका न्यूट्रिशनल डिमांड डेफिनेटली डबल होगा एज कम्पेयर टू फीमेल जो 35-40 के एज में. वहां पे क्या होगा कि आपका पोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है क्योंकि बॉडी एजिंग की एज में तो वहां भी डेफिनेटली न्यूट्रिशनल डिमांड जो है वो डिफरेंट लेवल पे होंगे. ओके, एंड अर्ली एडोलसेंस में आपका क्या चांसेस होता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो. ओके, inadequate nutrition of the mother can relate to the mental and physical birth of a baby. आपका डेफिनेटली क्योंकि बेबी का सारा ग्रोथ जो है वो कहाँ से हो रहा है मदर से हो रहा है. तो अगर आप प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ उसको डाइट नहीं देंगे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मील नहीं देंगे तो व्हाट हैपन कि बेबी का फिजिकल बर्थ डिफेक्ट्स वी सी मेंटल बर्थ डिफेक्ट्स वी सी. ओके, so much counseling and emotional support is needed. Okay, so health status, numbers of pregnancy, gravida, numbers of viable offspring, and prenatal nutritional state. So whenever we are taking now, हम GPLS स्टेटस लेते हैं फीमेल का कि कितनी बार प्रेग्नेंट हुए, कितने लाइव बर्थ है, कितने मिसकैरेजेस हैं. ओके, तो ये हम ग्रेविडा पेरा स्टेटस हम फीमेल्स का लेते हैं ताकि उसका जो है हमें ये पता चल सके कि फीमेल्स का बॉडी का वो कैसा है क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट कैसा है. ठीक है, एंड इनिशियली आई हैव डिस्कस्ड वन चार्ट विथ यू related to this pregnancy related. So basically if I talk about related to pregnancy कि आपको किस टाइप का मील प्लान देना चाहिए तो आपको आयरन रिच मील प्लान देना चाहिए पेशेंट को. ओके, फिर आपका कैल्शियम सोर्स होना चाहिए तो मिल्क होना चाहिए फीमेल की डाइट में. ठीक है, और उसके अलावा जो है आपका जो है क्या कहते हैं आपके सारे न्यूट्रिशनल्स जैसे कि मैंने बोला सेलेनियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, मैग्नीज होना चाहिए. तो ये सारी चीजें चीजें जो है आपका मील प्लान में होना चाहिए. ठीक है, अगर मैं बात करूं इन जनरल की व्हाट काइंड ऑफ डाइट वी शुड गिव टू द पेशेंट तो जनरली जैसे कि आप कैरेट्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. मीन्स फॉर एग्जांपल कि हम 8 to 12 पीसेस ऑफ ड्राई फ्रूट्स फीमेल को बोलते हैं ब्रेकफास्ट में आप ले.
ठीक है। प्री ब्रेकफास्ट स्नैकिंग जो होता है, ठीक है, उसमें आप कैश्यू नट्स बोलेंगे, आलमंड बोलेंगे, रेजिन्स बोलेंगे। प्रेगनेंसी में बेसिकली हम, हाँ, एक तो अजीनोमोटो मना करते हैं फीमेल्स को, और पपाया मना होता है, पाइनएप्पल मना होता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो फीमेल को मना होता है, ठीक है। सो प्री ब्रेकफास्ट स्नैकिंग में जैसे फॉर एग्जांपल हम उनको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, ओके। तो वो ड्राई फ्रूट्स को आप डिप करके खाना चाहते हैं, आप वैसे ही ड्राई फॉर्म में लेके खाना चाहते हैं, रोस्ट करके, डिपेंडिंग अपॉन दैट। ब्रेकफास्ट में हमने जैसे मूंग चीला दे दिया, या कोकोनट चटनी दे दी, पुदीना चटनी दे दी। फिर उसके अलावा आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स जो हम देंगे, उसमें हमने एक शेक दे दिया पेशेंट को, जो भी वो खाना चाहे। लंच में जैसे कि अब अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उनको हमने बिरयानी दे दी, मटन बिरयानी दे दी, ठीक है, प्लस रायता दे दिया। कोई वेजिटेरियन है तो उसको हमने राइस दे दिया, राइस के साथ हमने पल्सेस दी, ठीक है। 1.5 कप और 1.5 बाउल कह सकते हैं, 1.5 बाउल आपने राइस दे दिया, और साथ में 1.5 बाउल पल्सेस दी, और कुछ ब्रोकली या कोई ऐसी सब्जी दे दें आप 1 बाउल, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ फूड वी कैन गिव, ओके। इवनिंग स्नैक्स में आप कुक्ड और ये बेक्ड सैलेड दे सकते हैं, ठीक है। अ, जो भी पेशेंट को पसंद हो उसके बेसिस पे। और आप टी, लाइट ग्रीन टी या जो भी पीना चाहे, लेमन जूस जैसा भी हो, ठीक है। डिनर में आप डोसा बोल सकते हैं, ठीक है, और सब्जी बोल सकते हैं, या सांबर बोल सकते हैं, या फिर आप उनको चपाती बोल सकते हैं विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्जी। तो सच काइंड ऑफ डाइट वी बेसिकली प्रिस्क्राइब टू द फीमेल, ओके। आप शेक्स में कभी बनाना शेक बोल दिया, कभी उनको जो है बेरी शेक बोल दिया, कभी एप्पल शेक बोल दिया, ठीक है, कभी टोमेटो सूप दे दिया। तो in this way we altered the different kind of diet to the female patient, okay, clear? Yes, ma'am. ओके। और 21 टॉप फूड्स अगर मैं बोलूं कि उनको क्या क्या खाना चाहिए, तो बेसिकली जो है आपको एग्स, चीज, योगर्ट, नट्स, ओके, cereals, orange in form of any form, you can take citrus fruit, you can take berries, you can take banana and spinach and all, broccoli, everything, beans, lentils, और fatty fishes, इस टाइम पे fatty fishes देते हैं हम। or wheat related pasta, whole grain pasta, you can say brown rice, you can say tofu, you can say, and oil may we ask for uh, olive oil, and milk is very essential component. तो ये आपका डेली का, if I talk about कि what kind of food और things they should take, तो ये आपका जनरल में होता है, ठीक है। तो आप वेजीज के लिए फीमेल को प्रमोट करेंगे, ठीक है। प्रोटीन रिच में आप फिश, चिकन, टर्की और मीट वीट ये सब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर पेशेंट पॉक है, लैम है, पॉक एंड लैम ये सब, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो, ठीक है। एग्स अगर वेजिटेरियन है और एग खाता है तो एग्स दे सकते हैं। उसके अलावा पीनट बटर, नट्स, बीन्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन गिव, ओके। और मीट रिलेटेड जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हम दे सकते हैं, ठीक है। ब्राउन राइस, व्हाइट व्हाइट राइस, अगर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है तो हम ब्राउन राइस प्रिस्क्राइब करते हैं नॉर्मल, वरना वो नॉर्मल राइस भी खा सकते हैं। ओट्स मील्स और cereals वी कैन प्रिस्क्राइब, ओके। So this kind of things. Otherwise, banana, strawberries, apples, citrus fruits, mangoes, pears, avocado, pomegranate, क्योंकि pomegranate iron rich source होता है, grapes and dry fruits. So these are the basic things जो कि हम on an average, अगर मैं डाइटरी और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करूं, डेयरी में हमें क्या देना चाहिए, तो मिल्क है, योगर्ट एंड चीज है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमें पेशेंट को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसके फूड्स में होना ही चाहिए, ओके। सो एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? No, ma'am.